फोन पता नहीं कहाँ रख दिया। आ रहा हूँ 1 मिनट। फाइनल डे, डे 7 है आज। अभी भी प्रॉफिटेबल हुआ है। प्रॉफिट में चल रहा हूँ ब्रो, प्रॉफिट में। The fuck? The fuck? भाई तो लेट्स गो। ये ट्रेड लगा रखी है, इसमें भी ये ट्रेन लगा रखी है। $8 का प्रॉफिट हुआ है। सोच रहा हूँ $25-30 तक निकल लूंगा। ऐसे $37 कर लिया है। एंड जब 2 ट्रेड और सक्सेसफुल हुई है देखो। और हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हिस्ट्री है। मेरे प्रॉफिट भाई $17 का प्रॉफिट तो हुआ था। ये रहा $18। वो दिख नहीं रहा होगा। किधर है पोजीशन? $11 का प्रॉफिट और ले लूँ क्या? बट आई थिंक ये और ये नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा। सो उसके लिए रुका हूँ। $37 का प्रॉफिट है ब्रो। ऑन टाइम चल रहा हूँ ना। 37, $100 डाला था 1 वीक पहले। अभी ये 12 और आ जाएंगे तो आई गेस 50 का हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ 20 और कर लो तो $50-60 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ब्रो ऐसे देखा जाए तो सही किया हूँ। मतलब 60% अप हूँ अपने जो भी पैसे डाला था। अगर वही अगर इंटू वो रहता तो ज़्यादा अमाउंट रहता तो $1000 से लगाओ ना तो 60 मतलब कितना हो गया? $600। $600 इन अ वीक, ये सही अमाउंट है। $600 कितना हो गया? $600 इंटू 90, समवेयर अराउंड 99, 5400 इतने ही हुए ना। 54,000 वीकली। $600 इतने हुए ना ब्रो। चेक इट। $1000 से सही है। अभी मैंने कितने बनाए? 60 अगर मान लो बना लूँ तो 89, 5400 तो मैंने बनाया 1 वीक में। इसमें एक $17 का लॉस था, एक $10 का फालतू ट्रेड ले लिया था, और $7-8 ये लोग खा गए खुद ट्रांजैक्शन फी में। मतलब हर ट्रेड पे कुछ फी कटती है। वो जो अमाउंट जितना एक्स लगाओगे उतना ज़्यादा रहेगा। तो $10 लगभग वो खा गए 20, और $28 लॉस किया हूँ तो 48, इन टोटल $48 लॉस हुआ है इन टोटल। मतलब मान लो $104 का, $108 का प्रॉफिट किया हुआ है। इसमें से उतने ले लिए, इतने दिए हैं। इसमें से भी कटेंगे। $12 दिख रहा है, 1-2 डॉलर कट जाएगा, $11 आएगा। दैट्स द थिंग ब्रो। ये लगा रखी यहाँ पे बेचा, ये देख रहे हो चार्ट? क्रेजी अप गया है भाई ये। ओरिजिनल व्यू ये देख रहे हो? ये ऐसे अप गया था तो मैंने शांति से यहाँ पे ऊपर बेच दिया 49 पे, 1649 पे। अभी 15 पे नीचे जा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगा।
यहाँ तक तो नहीं, तो यहाँ तक तो आएगा, तो यहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ पे अराउंड $28 तक का वो हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब $16 और ऐड हो जाएंगे। अगर ये रिवर्स मार गया, रिवर्स तो नहीं मारेगा ब्रो, ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, समझ रहे हो? जिंदगी में इतना हाई नहीं गया होगा ये, इतना हाई चल रहा है। ये देखो, यहाँ तक था, फिर पूरा गिरा, फिर अब वापस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से तो गिरेगा ही ना, गिर के यहाँ तक आएगा, लेकिन बहुत दिन लगेंगे। इसमें तो क्रेजी प्रॉफिट होगा, कितने डॉलर, $5 हो जाएगा। यहाँ तक गिर के आ गया, यहाँ तक आएगा ही, लेकिन वेट करना सही है कि नहीं ये नहीं पता ना। चुपचाप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल लो। $12 हो रहा है अभी, इसको नीचे कर लेते हैं। अरे यार, इससे नीचे नहीं आएगा। ये है, बस आ जाए यार। मैंने यहाँ यहाँ बेचा है, ये अगर यहाँ तक बस आ जाए ना, यहाँ तक का वेट करूँ कि ना करूँ समझ नहीं आ रहा है। $13 लेके निकल लूँ, $150 हो जाएंगे। What do you think ब्रो, क्या करूँ? 15-16 डॉलर निकालने तो इजी है, ये अगर 10x अमाउंट हो तो और क्रेजी है। ये मैंने 5x पे लगाया है, मतलब $137 इंटू 5, 137 इंटू 5, इतने लगाया, इंटू 89, 60,100, 60,100 के बेचे हैं। ना 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 नहीं, क्या चल रहा है? कुछ म्यूजिक व्यूजिक लगाते हैं यार, वो चार्ज नहीं होगा। जेप्टो, कुछ मंगाता हूँ जब तक चैट आती है। Table fruits, I need something to eat bro। भाई यार इतना जिम कर रहा हूँ, फिर मीठा की क्रेविंग हो रही है इतनी ज़्यादा। क्या चल रहा है? Hovering around। ला। अरे कम होते जा रहा है यार। फोन चार्ज में लगाता हूँ पहले, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद म्यूजिक में।
No, 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 no. क्या चल रहा है चैट? I'm in profit, bro. $137 प्लस ये जो अभी जो निकलेगा कि नहीं निकलेगा आई डोंट नो बट आई थिंक ये मैं यहाँ पे बेच दिया हूँ, ये गिरना चाहिए यार। देख लो कैसे बड़ा है। ओके, थोड़ा सा रिवर्स मारेगा फिर नीचे आएगा आई गेस, नहीं तो $10-15 के लॉस पे कट कर दूंगा। देखते हैं। 137 हो गया, $13 तो निकाल सकता हूँ $150 पे एंड करने के लिए, बट जो भी है सही है। क्या चल रहा है? Who is your bro? Talk to me. जो ऑर्डर कर रहा था यार जेप्टो से, समथिंग टू ईट। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम मंगा लेता हूँ यार, गर्मी हो रही है। उफ, I need ice cream right now, bro. हम्म, चॉकलेट चॉकलेट काफ़ी चीज़ें हो गई ब्रो। कुछ नाउ नीड समथिंग स्पाइसी, चिप्स वगैरह। ब्रो और स्पाइसी क्या लूँ? इज माई ट्रिप से क्या मैसेज आ रहा? शट द फक अप ब्रो, ये कितना क्रेजी काम कर रहा हूँ मैं, बिजी हूँ मैं। I'm trading money bro, पता नहीं कैसे प्रॉफिटेबल हो बट हूँ। और म्यूजिक लगाता हूँ अभी, ईयरफोन लगाना पड़ेगा ना, चार्ज में लगाए ब्रो। What the fuck? भाई इतनी चीज़ें ऑप्शन आ रही है, आई डोंट नो अपने आप को। सही हो, क्या मंगाए बंदा? चॉकलेट आइसक्रीम सब मीठा मंगा रहा हूँ भाई। एक दिन तो खा सकता हूँ, बहुत दिन हो गए यार जिम करते करते। मॉन्ट कुकीज, eat cookies bro। नहीं, कुछ अच्छा है क्यों नहीं यार? क्या चल रहा है? $14 हो गया। डैम, डैम ब्रो, डैम ब्रो। क्या चल रहा है चैट?
What's going on, bro? एक वीक में 5,000 इज लाइक लेबर की इनकम। व्हाट डू यू थिंक? 60,000 कमा लूंगा। अब मतलब तो 4 ही वीक होते हैं, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का गॉड नोज मैं क्या करूँगा महीने के, समझ रहे हो? भाई $60 हुए भी नहीं अभी। इसमें कम एक्स पे लगा दिया यार, 15x पे लगाता ये अभी चुपचाप $42 हो जाते हैं। इजी। आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे। तो आना चाहिए। तनना, ओह। आजा आजा। नीचे आ जा ब्रो, जल्दी। इस सारे डिस्कॉर्ड में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है ब्रो। ये ऑलराइट इज इन द सेंटर, तो ये कहाँ जाएगा? ये अब ऊपर जाएगा। BTC will go up, बट ये bearish बोल रहा है आई गेस। ही इज सेइंग नीचे जाएगा आई गेस, बट एम बनाएगा यार। Fuck that shit, bro. Zaman başa doğru. Should I wait? बहुत सही। यही 3 चीज चाहिए थे।
जो आ जाओ नीचे। ना 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 नहीं, पैसा फ्री। क्या चल रहा है? चल, और जो नीचे। 15 डॉलर पे निकल लोगे भाई? कुछ चार्ट ही नहीं है। आएगा ब्रो। इसको ब्रेक करेगा तब नीचे आएगा। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ना 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 ना। बाउंस बैक कर रहा है ऐसा। Let's not go, but tonight I bounce back. Maria. क्या टाइम है? Sure.
अरे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नहीं ब्रो, $37 प्रॉफिट हुआ था अभी तक, प्लस ये 15 निकालूंगा तो 150 पहुंच जाएगा, तो यानी $50। 50 ही है ना। बट क्या है यार भाई, एक वीक में $50, $100 लगाने पे एक वीक में $50। $10-12 तो ये लोग ट्रांजैक्शन फी काट लिए। 40, $28 हार गया। I lost it। ये तो सही ट्रेड ली भाई शायद, देख रहे हो इतना ऊपर था। भाई वो जो ट्रेडर्स बताते हैं ना कि हाई पे सेल करो, लो पे बाय करो, सही बताते हैं ब्रो। कोई भी चार्ट ले लो, एक लो आता है, नहीं तो वेट करो लो आने का। ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, वो क्या करते हैं, बाय करते हैं। उनको पता है कि ये पैटर्न है, ये ब्रेक करके यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे बाई करेंगे कि फिर ऊपर जाएगा, प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर भले ऊपर नीचे अप करे। वैसा मैंने नहीं किया है, बट दैट्स द थिंग, ये नीचे जाना चाहिए, बस वही है। हेलो, आवाज आ रही ना? फक यार, गर्दन दर्द कर रही है। $17 हो गया भाई, 30 पे निकलने का प्लान है। 17 ऑर्डर तो कर दिया डॉक्टर से, तो 14 मिनट। लैपटॉप ले रहा था यार, ये क्या बीटी है। free। $70 ले लूँ क्या, कि वेट करो भाई $30 तक का। आई डोंट नो ब्रो। व्हाट शुड आई डू? ये हो गया सब बड़ा है, ये थोड़ा यहाँ तक तो आना चाहिए। आ जाओ ब्रो, आ जाओ। I will cut around। जो भी है सही है। और नीचे किसी ने पंप किया है भाई इतना ज्यादा, ये 12 घंटे का ग्राफ है। और जो किसी ने मैंने सेल कर दिया, ये तो बनाएगा। क्या पता है ऐसे रिवर्स मारे यहाँ तक फिर वापस है, आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा। मैंने यहाँ बेचा है, यहाँ रहना एट दिस पॉइंट। इतना हाई गया है भाई, सही टाइम पे। क्यों, अगर यहाँ करता तो ये और ऊपर चला जाता, फिर उसके बाद सही टाइम पे पकड़ो। टाइमिंग का गेम है, चार्ट देखते देखते आदत लग जाती है,
तो तुम्हें समझ में आता है कि क्या होने वाला है। ऐसा ही है, मतलब इंस्टिंक्ट का गेम है। नीचे है तो खरीद लो, थोड़ा सा ऊपर जाए तो बेच दो, ऊपर है तो बेच दो, थोड़ा सा नीचे जाए तो। स्कैल्पिंग तो इजी है। दैट्स द थिंग ब्रो। ऐसा कुछ चार्ट वोर्ट भी नहीं बनाता मैं, बट वो स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहा हूँ जो वाला, वो नहीं, 3:1 वाली रेशियो। क्योंकि मैं लॉस ज़्यादा छोड़ दे रहा हूँ तभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों, नहीं तो अगर वो 3:1 वाला रेशियो रखता तो हर बार हिट होता, हर बार 10 $10 खत्म हो जाता है। समझ। सो व्हाट टू से। भाई ये भी ऊपर चला गया पीछे से ही। बट इसको भी सही प्राइस में बेचो। किधर है ट्रेड्स का? ट्रेड्स सेटिंग्स देख क्यों नहीं रही है? ये रही। भाई यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया। फिर से एक बार एक मार दी ब्लीक, बट पॉकेट ब्रो, मैं सोचा कि क्या ऊपर जाएगा, ऊपर गई। लाइक निकाल लेते हैं पैसे, $70 फिर तरह तरह। यही बस, ये नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो। ये पूरा गेम है, नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो, नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो। अब ये भी देखना है, मतलब ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे खरीद लो तो फिर तो गए ब्रो। लेकिन जब वो नीचे आ जाए तो खरीद लो थोड़ा सा, फिर और नीचे आ जाए तो थोड़ा सा खरीद लो। ऐसे मतलब बड़े ट्रेडर्स करते हैं ये। $100 में तो यही होगा, सिंगल टाइम। ओहो, $18। पहली बार ये वाले रेंज में आ गया। अब यहाँ से तो बिकना चाहिए क्रेजी। नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। डेली मूविंग एवरेज ये है 15835। $19। लेट्स सी क्या होता है यार। क्रेजी प्रॉफिट दे रहे हैं, $19 होगा। थोड़ा ज़्यादा लगा था तो ज़्यादा होता, 5x किया था इसमें। क्यों, डर लग रहा था कि उल्टा चला जाएगा तो क्रेजी टॉस। नहीं, धीरे धीरे नीचे जा रहा है।
भाई ये कितना ले रहा है टाइम जेप्टो यार। ओह फक, क्रेवी इतनी हो रही है। आ जाओ भाई नीचे आई। $18। उफ, उफ, उफ। 10x पे ही अभी 40 डॉलर होगा। 15x पे ही 60 15x। बिटकॉइन तो क्या ऊपर रहा। क्रेजी क्या हो रहा है यार, क्रेजी हो रहा है। यहाँ पे बाय करना था। 5 8। हाँ तो हो गया था। उसमें आ गया था। फिर से $15। इसके चक्कर में इस पे नहीं लगा पाया यार। यहाँ पे भेज देता शांति से। तब प्रॉफिट तो हो ही रहा है। चलने दो यार। भाई जितने कई ट्रेड्स लिए मैंने, सारी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होती। फिर डर के मारे मैंने पहले भेज दी। रोलो प्रॉफिट। देखते हैं। How do How you do you know know which which coin to coin to buy? buy? To To keep keep it it super super basic, basic, we're we're looking for looking the for the banner, banner, we're we're looking for looking the for the logo, of course, block liquidity. And let me touch on volume real fast. My number for 5 कुछ भी बता रहा है।
मैं कोई नई वीडियो डाली क्या? In this video, I'm going to Full guide. Trading. In this video, I'll be covering a simple daily म्यूट करते हो पहले. process that you can use to follow trends, take multiple trades per day, and create an income generating machine for yourself. Okay, this strategy has simple defined steps, a simple systematic approach, and are even alerted out algorithmically via our Discord. All right, so this system and resources that I'm going to be sharing with you guys is what I'm using to now be on a 19 trade win streak, averaging around $1,000 in profit per trade that I've been documenting for you guys on YouTube. It's also allowing members of our private team to do things like and then have the price continue in our direction and be able to have better. All right, so let's first dive into exactly how this system works. Okay, I'm going to break it down piece by piece. And then, like I said, I'm going to put it all together so you'll be able to get a holistic view. But I want to break down each step because having the foundation and understanding how it works is super important. So the very general premise of the system is to allow us to be able to trade in the direction of a current trend and use different market indicators and approaches to be able to ensure that we can get into dip buy levels in this current trend and then have the price continue in our direction and be able to have an extremely high win rate. So like I said, we can profit off of following trends. There's a few steps we need to follow with this system, and this is going to be part of the daily checklist process. So first part of this system is to wait for the volatility to die down in the New York session. So you'll see later on our charts, we're going to have a gray box. In this example, it's green. Basically showing us when the New York Stock Exchange opens. Now, US Stock Exchange can lead to a lot of volatility in the market. And for this system, we kind of want to avoid big moves up or down in the market that are driven by fundamentals. We're looking to just get in, get out, and sort of make money off of the small fluctuations in the market. So the goal is to completely avoid from 9 a.m. to about 11:30 so that we can see the direction that the market's moving and avoid some of that crazy fundamental volatility from the New York Stock Open. For step 2 of the system, we're going to be finding the high and lows that happened on our chart during this New York session. So for example, here, if we have this high and this low, we'll see if the price is first able to break out of this high or if it's going to break down that low, which is going to help us determine the general direction that the market could potentially continue to move throughout the rest of the trading session. So once we have the thesis for our trend direction for that day, we're going to be waiting for our 20, 50, and 200 day exponential moving average to all show up as green to give us further confirmation that we're actually in a trending exponential direction for that day. We're going to be waiting for our 20, 50, and 200 day exponential moving average to all show up as green to give us further confirmation that we're actually in a trending state in the market. Okay, we're going to be waiting for our the trading session. So once we have the thesis for our trend direction for that day, we're going to be waiting for our 20, 50, and 200 day exponential moving average to all show up as green to give us further confirmation that we're actually in a trending state in the market. Okay, and this is going to be part of an indicator that I'm going to show you how to add to your charts for
completely free. All right, so once we have our moving averages and our trend direction, we're then going to be finding our trading range, which is going to be after these moving averages all change to one color, finding the lowest point to the highest point, which is going to give us our trading range for this system. Okay, once we have our trading range, this is where our custom indicators are really going to shine. Okay, so we have our trend direction, we have our EMAs lined up, we have our high and lows. We're going to use this custom fib setting, which I'm going to go into much more detail here, but you can see the settings right here if you already have fibs on your trading view. It's going to look something like this, and we're going to start our Fibonacci at this high for a long, end our Fibonacci here, right? And with all of these settings, we're going to have our entry level, our first dip by level, our second dip by level, and our stop loss by Fibonacci indicator values that we can set as a preset and then use in conjunction with some of the tools that I'm going to show you. For now, all you really need to know is that we're going to be dragging a fib across our trading range and then setting values for entries, dip by levels, stop loss, and take profits. So really what we're doing is setting up a fib, even if this does chop around and hit our entry and go to full profit, or this wants to dip down further and then have a small correction. The goal is to be able to get out for full profit. And we actually built a custom calculator once we actually back tested and found crazy results on this process. Okay, the cool thing about this system is this isn't really intuitive, but once we started testing things with numbers and algorithms, we actually found this pocket in the market. Of course, we go into way more depth on the private side of our team, but I can still share this strategy that we know works based on our deep back testing. I can pop some of the results up on the screen here, at least enough with you guys to be able to get started and start using this on your own with the free results up on the screen here, at least enough with you guys to be able to get started and start using this on your own with the free resources that we have. So to quickly recap before we move on, we're waiting for the New York session to end. Then we're marking the high and low that was made during this New York open session and waiting for one of those to break. Once we have that directional bias for the day, we're waiting for our moving averages to turn all one color. Then we're setting our trading range from the most recent low before the moving average cross in the high. And then we're going to be using our custom fib settings in calculators to be able to start at the beginning of the trend, click down to here, have all of our automatic orders and input them with the calculator, and then let the trade play out. All right, so let's shift gears here and talk about all of the tools that we're going to need to be able to complete this process. So first thing is going to be TradingView. If you don't already have TradingView, this is how we're doing all of our charting with whatever we're trading. If you need an intro to basic charting, I have a TradingView tutorial setup video, as well as some basic trading education that you can watch if you ever get lost at any point in this video. But TradingView is going to be where we're going to be doing our charting. Then the next thing is going to be our position size calculator. Okay, so this is in the resources of the description. Okay, it should be called Trading Tools. You can go in there, download that, and in that is going to give you access to the indicator, this calculator, and all of the tools that I'm referring to in this video. Make sure when you open this link, you can just create a copy, and that's going to give us our calculator. Okay, the third thing that you're going to need is some sort of exchange to trade the markets. Depending on the market, it's going to determine which exchange you're using. Okay, for cryptocurrency, I've found that Bybit and Femex works with these order types and also has enough leverage for you to be able to take these positions. Okay, the third thing is going to be our Discord server. Once you join into our Discord community, you'll see a channel here called Smart Alerts, and the system I'm going to be sharing with you is going to appear something like this. And you can use this process to find these opportunities, look at the time, and then look to set up these trades and see if it follows your rules. And then the fourth thing is going to be your trade tracker. So regardless of the trade tracker that you're using, you need to be paying attention to the profit that you make each trade, your winning percentage, your average risk reward, and all of this data that I'm going to show you how to fill out in a second, and I'm going to show you examples of as well. Okay, like I said, everything is going to be shared with you in the description, so you can either add all this as you go or watch this one time to learn it and then watch it again while you have all your tools set up to implement it. All right, also if you find this dope, make sure you hit the like button on the video. It helps to show me that you appreciate me making this video. But in order for you to actually like it, I have to show you that it works. So let's get into the first step of setting up our TradingView chart. So when you hop into TradingView and you get the tools in the description, you're going to add something called the IT Foundation Indicator. And what this is going to show us is a few things. First thing it's going to show us, once again, is that New York session open time. Okay, if you don't want to add these indicators, you can totally do this on yourself too. So Lux Algo actually has a really good session indicator. We have the total New York session as well as the total London session here. And then you can just use simple moving averages and change them in the settings value here to be exponential, and then change the length to whatever, 20, 50, whatever you want. For sake of simplicity, I like having it all in one indicator. Okay, so this is showing us our no trade zone, and then this moving average is showing us our trend direction. So notice how when the 20 is over the 50, over the 200, all of these are green. And then when we get a momentum shift in the trend, the 20 goes under the 50, under the 200, and now we have a general
real trend direction. All right, so let's talk about fib settings. The way you can set this up is by clicking over into this menu and going into fib retracement, and then just click from this part in the chart, go down a little bit and click again, and then just hit the settings wheel and apply all of these settings. All right, so this is our stop loss level. This is our first dip buy level. This is our entry level right here, our take profit in green, and then 0.17 is our second dip buy level. Then you can just hit this wheel, save this as a template, and you'll be good to go moving forward with your trading. So now I'm going to set one of these trades up, and then I'm going to show you how to use the tools and resources on this first example. Then we're going to look at a few more examples and exactly how I traded them in real time, so you can get a grasp on sort of the whole process. All right, so let's also refer to our system over here and show how it actually applies to a chart in real time. So I have Solana right here on a 3-minute time frame, meaning that each of these candles is showing me 3 minutes worth of movement. We have our New York session box here. So now we need to wait for the price to leave this window. Okay, so now we are officially outside of our New York zone. So we've waited for our trade. Okay, second thing that we're going to do is mark these highs and lows. So I like to use these horizontal lines here. So you'll notice inside this session window, this is our low point and this is our high point right here. So as this moves forward, this is going to help determine which direction the market could potentially trend for the next few hours, which is what we're going to try to trade. Okay, there's a lot more that goes into this, including daily bias and other technical analysis. I'm not really going to dive into that today, but these are some of the things that we do focus more on the private side of our trading team. Okay, a lot of people don't know, but you can make money as the markets move down too. This isn't only trading things when they go up. The thing that I love about trading is regardless of the directions of the market, I know I'm going to have a job because I know how to trade the markets in both directions. So this is actually an example of me trading the market to the downside, doing something called shorting. So this is super cool and it works basically exactly the same, just in a different direction. So I really want to see a good confirmation and close below that. So you can see we had this candle close and this candle close underneath this line. So we're in good shape for a confirmation in this direction. Okay, so now we've checked off this process. Okay, so the next thing that we need to do is wait for our moving averages to all be lined up the same color. So as soon as we have this small point under here showing us the 20s under the 50 under the 200, we have the green light confirmation from our trends, also from this closing below the session low, for us to start looking into trading this trend. Okay, so now step 4 is going to be finding our trading range. So just like we found the high and low right here, so that means that we're going to be choosing this high point right here and this lowest point before we have a turnaround in the market. And this time, considering the market's moving down, I'm actually going to click from this first low point right here and drag all the way up to this highest point right here. All right, you'll see this is going to give me all of my levels: entry, dip by 1, dip by 2, and our stop loss value. All right, so let's move on to step 4, which is actually adding and inputting our values. Okay, so you can see we have our trend direction, we have all of our levels. Now we need to use our calculator to be able to know our expected profitability as well as
as the quantities to be adding at each level. All right, so now Let's switch on the mic, bro. Now we're going to go over to our calculator. On my Fibonacci, if I go into this section here and I check this box, which is going to show me prices, that will put into parentheses the exact value at each point in our fib. Okay, so when I go over to my Very smart, calculator, yeah. all I need to do is put in my calc total. Say I'm trading with $20,000. Okay, you can trade this with as little or as much money as you want. Okay, considering this is a short position, we're going to click on short. We're going to put in our ticker. Our first limit is going to be this entry value, which in this case is 127.10. Take profit is 124.26. Stop loss value you can see is 129.99. Standardly, we like to keep the leverage at about 25x, but you can sort of modify this to make sure that the margin is going to have this yes box to make sure that you're not going to get liquidated on the trade. All right, this limit one is going to be our dip by one value, 128.12, and we got 129.04 on our second dip by level. So that's going to show you your expected take profits depending on which limits are hit. And you'll notice if we get in on our original entry, for this trade example, on the public side, I want to keep the risk small. So this calculator is accounting for using 10%. Open up a new cell here, add the day that I की प्रोडक्शन तो सही हुई ब्रो. Damn.
Let's end the trade, bro. So 155 USD. इसको लंबा जाने दे सकता था बट let it be. कितना लगा कितना 0.8 $1 ले लिया शायद इन्होंने $1 से पर 1.2 $2.5-3 तो यही ले लिया कहाँ से पड़ेगा तो कोई ना प्रॉफिट तो निकाल लिया कोई ना $155 पे ब्रो अरे मेरे पास में आ सकता है मुझे तो ये रेंज सही है हमारे लिए 18-19% करके खत्म हो जाए क्या पता चलता रहे I don't know. FSL 965 तो नहीं घटा है ज़्यादा तो नहीं घटा 2.7 चलेगा सही है जो भी है सही है 55 उसका प्रॉफिट यार तो ऊपर जाए जा रहा है जाए जा रहा है ऐसे में $10 को लॉस होगा छोड़ो भाई इसमें बहुत लॉस होता है एंड करता हूँ बाय डे 7 I'm done bro order history this is my order history bro trade history दो गलत किए मैंने उस ट्रेड्स $2 $16 ये अभी $18 अभी जो प्रॉफिट हुआ है ये $18 पिछले ट्रेड में -$7 पता नहीं क्या था हाँ वही ट्रेयर में जो $10 आ रहा था आ रहा बोल रहा हूँ I mean, गलत ट्रेड उठा ली थी
फिर उसके बाद $1-2 का प्रॉफिट हुआ शायद। उसके लिए $5 का प्रॉफिट निकाला था, $2.5 ट्रांजैक्शन फी काट दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। देन $5 ही है। आज ज़्यादा ही कर लिया क्या? एक वीक का देख तो ऊपर वापस चला गया। ये नहीं है। वीक में एक बस ही -16 है, बाकी $10, $13, $5, $1 -$7 हुआ है, $2 $16 और एक 14th को था $23। ये 23 -16 10 13 15 35 है आई गेस। I don't know कितने डॉलर, 2 3 2.5 -$7 16 and 2 18 18 दो 18 के आगे उसने ही ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया। Let me see. You know. भाई ये बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था तब की है। बाकी ये I'm $55 up. Seven days and 33. Total profit $80. Total loss $24। लॉस तो ज़्यादा हुआ है, डेटा कुछ गलत है। पिन रेट 10%। भाई सब जीतो। $23 -17.6 minus, I don't know why, 21 -6.7, और $36 ना, 18 here, right, दो ट्रेड से ले ली। चल ठीक है, ऊपर गया, क्या ही करूँ। ऊपर है वो रहा, चलता हूँ चैट। Profit is $55. Trading 110%. Using to chart, adding to theme. 13. Using to the door. Even the same treasury. Copy. Share. Offer. भाई अचानक से एक बार क्रेजी आ गया।
ये है पिछले साल वो ऊपर नीचे करते रहे, मेरा काम तो हुआ। ट्रेड्स थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है। स्टेट पे यही कही दो, इस टाइम नींद आ रही है।